Good evening, guys. Am I audible? Is it visible? Guys, कोई mic open करके बता दो. Is it audible, visible? Yes, sir, it's audible and visual. Okay, all right, Yes, sir. guys. Just a second. Just give me a minute. Good evening, guys. Am I audible? Is it visible? Guys, कोई mic open करके बता दो. Is it audible, visible? Hello, can you hear me? Okay, all right. Hello. Can you hear me? Sir, just a second. Okay. Sir, just give me a minute. Sir, I can hear you. Just give me a minute. Okay, I can also hear you. Yeah, guys. Good evening, everyone, and we welcome you. As you know, this is going to be an training on React.js, and Fifthforce is organizing this training. And I welcome everyone on behalf of Fifthforce and our mentor, Victor Banerjee. This side, I am the program in charge. And for this entire program, guys, your mentor would be Mr. Ashok Gupta. He is already here. So guys, before I don't want to waste your time because I'm not the right person to speak to you regarding this. So I'm just here to introduce sir and just to set the tone. Guys, just for the class to run smoothly. So as you already have done, you all have kept your mic off and camera off. That's good. So whenever sir asks, you can open your mic and I'll make two or three of you co-host so that the class does not get disturbed. So if there is people in the waiting room for all classes, if there are people in the waiting room, please allow them so that sir can continue with the classes. Okay? Chalo then. Let's start. Sir is already here. All right. Sir is already here. So let's not waste your time. I welcome you all for the first day. And Mr. Ashok Gupta sir is here. So you can take it over now. Hello, may I start, Victor? Yes, sir. You can start. Can you hear me? Thank you. Sir, Okay. just a second. I have already made you the host. So co-host, I'll make you the host and then I'll leave meeting. Okay. Thank you. Okay. Good evening to all of you. Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening. So here, what we are here for the our very important and a very demanding course that is going on in the right now in the market. That is what the React.js. Before starting or going into the React.js, I have to have something that is required before that. So let's talk about that things. And today what we will do, we will try to understand why we need the React.js. If there are other things are there, then why we need, what is the need of this React.js, why these are in the market. And then at the same time, we will come to know what are the things you should require in your machine to work on the React.js. Guys, I want to say you one thing on the very first day. Please download the thing that I will ask you to download. Otherwise, it will be very difficult for me to continue the class and as well as you, because the entire course will be an industry demand based. So in industry demand based means I am not going to waste your time in giving a PPT or showing you the PPT, going through the lots of things. I will discuss with you and help you in developing an app. So at the end of the course, if anyone asks you or any industry people come to you
and say, can you do this? You will definitely say with a confidence that yes, we can develop this. That is what I want, and that is what our motto should be at the end of the course. So first thing first, I want to know from all of you, is there any guys who does not know HTML? HTML5, remember, HTML5. My voice is not coming. Is I am audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are audible, sir. Okay. So please let me know if anyone is there who don't know HTML5. If any guys who does not know HTML5 or does not know have a concept of OOPS, object oriented. Jaya Singh is saying not audible. Sir, we are comfortable with all HTML5 and OOPS concepts, sir. Okay, fine. So can I ask you one question very simply? The question is, can you say me what is HTML without giving me a definition like hypertext markup language? Without this hypertext markup language. It is the structure of the page. It defines the structure of the page. HTML. Okay, anything else? You can type in a message chat box. Okay, all of you are saying basically the structure of the web page layout. Okay, fine. Can you say me what do you mean by your web page? Web page should consist of at least what are the components should be there in the web page? Any website or any web page should have that one. Header, footer, body. No, not that. The three things that is the heart and core of a website, and it will be required for developing a website. These are the HTML elements. One is HTML will be required. HTML, CSS, JavaScript. Very good. HTML, CSS, and JavaScript. Because without these three, you cannot develop a good website. So now the question is, if there is already an HTML and there is already an JS that you are using, and there is already a CSS which you are fine, and at the same time you may have you heard about the Bootstrap? Yes, sir. Okay, fine. So all of you have also heard about the Bootstrap, and Bootstrap is what? It is a responsive website. A responsive website means you can, using a Bootstrap, you can create a website that can be also be opened in a mobile without losing the screen. That means the layout with the same layout. That means the layout will be not changed. Akash Deep, my voice is not coming, but others are able to see Akash. My voice is audible to all of them. Can you check it out? Now, so what we want, then why these React.js, why these AngularJS, why? Any idea from Sir, anyone? for making single page applications. Again, making a single page application. Now, can you say me, can't we create, listen very carefully, can't we create using a React.js or AngularJS or whatever you say, because you don't know, a multi-page application? Noise is there. Sir, we can, but the optimization is more. It only update the component that actually need to be updated. If the component that is needed in the other page is already exists, it doesn't update that component. Rather than it updates the ones that it should be needed. That we can do using the Ajax. The same thing will be done by the Ajax. Ajax is also synchronization as well as asynchronization. Sir, for virtual DOM, sir, we use React.js. What is the reason behind it? Let me say you.
The reason behind it, you may say you have an Android. What is the Android used for? The Android is used for developing a web application and apps that can be run or that can be put it in a Play Store. When we using an Android, what we have to do, we have to design it. And when we are designing it, at the same time, we have to do two apps. One will be for the Android, another one will be for the iOS also. Why? Because the Android will run only on the Android, and for iOS there is a suite. That is another different platform. So the companies, what they want a single platform where the apps can be developed using something that can be run in any platform. Because of that, to overcome these problems, what they have done, they have creating this app, React.js and the other things that are coming right now in the market. And another important part is, the most important part is, nowadays the programming that we are developed in a model. What is that model? The model is known as the MVC model. Have you heard the MVC? Yes, sir. Model view controller. Yes, sir. Model view and controller. So what, can you have an idea of a model, controller and viewer? Because I don't know, that's why I'm asking, so that I will not waste the time in saying the same thing again, if you know it. Or should I say something about the model view and controller? Okay, I'm saying something. No, what do you mean by this model view and controller, and why this concept has come? What is the reason behind it? When we work as a developer, when we develop one website or any software, it is a teamwork, not by a single person. Someone is good in coding, someone is good in designing, someone is good in JavaScript. So when we all work together, what is happening? We have a single application that needs to be that needs to be updated. And if there is any designer who sends us the design, that is always continuously noise is coming with your voice. Why? Is it happening for all of you? Hello, is Yes, sir. Yes, sir. I'm clear, audible to all of you? Yes, sir. But Yes, there are sir. some saying the voice noise is coming. As a background Sir, there is a noise. distortion in between, sir. What is that? Sir, there is a distortion in between, sir. Sir, traffic So noise. may I speak slowly a little bit? No, sir. No, sir. Sir, you are audible, but your voice is towards the low end. Why it is so? So the pace is good, sir. So just a moment. Now is it clear to all of you? Yes, Hello. sir, it's better now. It's better now? Yes, it's Okay. So what I mean to say, a model view controller, what is the concept behind is that when we work, a design is sent, because we are the coder, when the designer sends us the design, it is always in HTML. And when you want to develop a dynamic page, so the HTML is, you know very well, it is a static page. To do that, what you have to do, you have to convert that into a .aspx page or .php page or whatever the things on whichever you are developing. So when we try to convert it over there, what will happen? Something change in the design and we sometimes mess it up. So again, we have to ask the designer to change it. So this is one of the greatest problems we face when we are developing the project at that time. Suddenly comes a very good concept that is called what? A model and a view and a controller. What do you mean by the model? And what do you mean by the view and what do you mean by the controller? Let's make it very simple and clear. When you are going to any website, you are clicking on a button, right? And when you click on a button, something is happening in the background and you are getting some response. So when you are getting a response, the response may be the one that you want or maybe something that is what happens. Something is happening.
So from here, can we come to know which is the viewer part? The viewer part is the presentation part that is viewed by the client. So when the client is clicking on a button, to whom it will contact, whether the controller or the model. Controller, sir. That means when you're clicking on a button, what it happens, it is going to the controller. Who is the controller? That means a controller where you have written something or you are asking some objects. Maybe some object is there or something is there. So what will happen when you are clicking on it, it will go to the controller and the controller will talk with the model. Yes or no? Sure, sir. And then the model will return back to the controller and the controller will return to the view. So what is the concept is over here? If you are very good in developing or writing a business logic, who are very good in writing a business logic, they work on the model. Is it, are you agreed? Yes, sir. Those who are very good in business logic, what do you mean by, again you are saying model is not a database, remember. Again, I am not talking about the database. Model is not a database. A model means your application's entity, your application's object. When you go to a database, that means a model will talk with the database. So database is another layer that is called as data access layer. So when you work, there will be two things. One will be DAL, data access layer, and another one will be BAL, that is known as business business access layer. So there is two. One is what? Data access layer. Another is what? The business access layer. That means where you have writing your all the codes. And database is what? The business access layer is connecting with the database and database will return to that one. So the model will be, model is what? The model is an entity object where you are declaring what will the functionality of the model. That means how the model will looks like. To function it, what you need a controller and the controller will return back to whom? To the viewer. So this is very, very important part. So you should know a viewer means it is going to be fired on the, it is always going to be fired. Where it is going to be fired? It is going to be fired in the browser. So viewer is what? The viewer is the part that is going to be viewed by any user. So it has a good presentation. When the viewer is there, there must be some button and that button needs to be talked with some controller or the model. And the model is what? The model is the part of what? The data access layer. So data access layer is another the different part. So when we are working over there, there are lots of things there. Now, nowadays you may see when I am talking about an apps means it is not going to be going. It is going to be learning going to be done from a mobile. An app can be also, you need a website also. A website is will be there. That website is a website where you have the database. To connect and to work with an app, can you say me what we require? Whenever we are apps, the apps are working. So when the apps are working, whether they are directly they are talking with the database. So how they are talking with the database? Because the database is not over there in the server. So they are talking through the server. They are talking to the server. Sir, the So client, does the HTTP calls and ask server to further connect with the database, and the server will bring the data to the client. Right. So what you have to write over there so that when you are going, it is going to hit the server and the server will return back to that one. That is known as the API, the web API. Nowadays, whenever you have to develop any program, with the program, what you have to develop, you have to have developed or you have to have create a web API. Previously, when you are working, may you have heard that you have created a website and your work is done. That's enough. But nowadays, what I need to do, I need to create a REST API. Before this, we have a SOAP API, but right now, we will not talk about this thing. I'm just giving you the hint. What we need,
we need to create a REST API. What Sir, does could you the explain API again? Yes, I'm coming to that. But just a moment. So what do you mean by this API? API means you have some URL address which you are giving, and through that you are saying if you want to connect, for example, if you want to connect to my website, what you need to do, you need to pass with the URL some value. What are those values? You have to give some ID and then the login ID and then the password. For example, to understand it very clearly, if you want to use a Google map in your website, what you have to do? What you have to do? Sir, They put the map. That means you have to register over there and you have to get some ID, yes or no? Yes, sir. What is that ID? Why they are giving you that ID? Because they are giving you that ID so that they come to know you are a registered user over there. Once you get registered, they will give you one ID. And then what they will give you? They give you some URL. What is that URL? They will ask you to put that URL in your or embed that URL with your HTML code, and you will be able to see the Google map. Is it correct? All of you agree? Yes, sir. Right? So that is what happens. So how they come to know, that means when you are giving something, that means we have created some functionality. That means we have created some function that is going to be exposed, through some URL. And so that it will be exposed, we have to make it secured. We make it secured by putting some functionality that we are giving some secret ID. And that ID needs to be sent over there. Until and unless they pass the ID, we will not provide any information to anyone. There are some websites who will say, I can provide you without that ID. That depends. So what you have to do when you are creating a REST API, basically what you are doing, you are creating some functions or developing some functions inside that API, which will take some parameter, which has some signature along with some validation. So when they are passing that through the URL, when they are passing it that through that URL, when that API is taking the value, it is going to check the validation whether he is an authenticate user or not. If he is an authenticate user, then he will take the other values that you have passed through it, do the functionality, and return back to you some information. That is the work of an API. Another advantage of API is what? If you create once, it can be used by anyone to whomever you want to give the permission. So that means you don't need to create an API for each and every one. An API can be called from any language. That is the another great advantage. You may ask me, if I create an API using .NET, if I create an API using a PHP, if I creating a user API in Java, what will happen? There is no problem if your API can be created in any language and it can be called from any language. So nowadays, what happens whenever you have to create an application, you have to always create what? Also the API. Now you may say me, what will happen if I not create an API? I have developed only a website. There is no harm. There is no harm. But tomorrow, if your client wants that I want to make an app, then what will happen? Because when you're creating an app, when you're running anything on a mobile has an app you download from a Play Store that needs to be talked with the server using through only the API. No other functionality can be worked over there. There is only one functionality that is going to be worked, that is what? Using an API. So if you don't have a REST API developed over there, you will not able to call it. Another functionality is that suppose you want to use some banking information
You have an application where you need, supposing I have given you one project in which I want that you should show me an information or create one app which will show you in your locality who are the donors, blood donors, and who want to donate the bloods. There are some rare bloods, and that you want that in your locality, you want a database of that person who have the rare collection of blood that is available over there, and they are the live donor. For example, AB negative, A negative. These are the very rare collection. So what you will do? How can you do it so that anyone can get it? In that case, you have to create the API, and you have to know whether there is any API is already created or not. The greatest advantage of OOF technology, can you say me, what is the greatest advantage of OOF technology is, and that is not possible in C, that is called a procedural language. What is the concept of writing a code when we are writing a code in our OOF? What is that concept that makes it so popular? What is the theory on which we are writing? The theory is very simple, guys. Who will do the job for me? When we are working on an OOF technology, we are working on this particular phrase, who will do the job for me? What I do, whenever we are working on an OOF, we will look whether there is anything available, ready-made available or not. If it is available, we just call it and pass the value and it is done, yes or no. All of you, please, have you understand this part? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is one of the, if you understand this part, remember, you will never have a problem when you are going to write anything. You may say then, right, that's why the Java is so much popular, because Java gives you, why I'm saying you, because these are all related with the React when I'm going to the React. Why the Java is so popular? What do you mean by this framework? Nowadays, you may have heard .NET framework, you may have heard Spring framework, you may have heard Java framework. What is this framework? Sir, it is the server-side framework for building the REST API. Again, listen very carefully. When you say something, please remember when you are using a terminology, be careful. When I am asking you a framework doesn't mean that it will be always used on the server side. When you are working, you can also develop a desktop application using a Java. You can also develop with a simple application in your local machine also. So server is not that particular thing over there. Can you say me any other thing? Sir, backend? No. Sir, framework means sir framework मतलब एक structure होता है sir. It is a structure sir. फ्रेमवर्क मतलब कुछ भी बनाने के लिए नहीं, एक चीज बताता हूँ, फ्रेमवर्क बनाना मतलब होता है एक स्ट्रक्चर। नहीं, मैं खूब प्लीज नहीं हुआ ये आंसर से, मेरे को एक प्लीज वाला जिससे मैं प्लीज हो जाऊँ वैसा एक आंसर दो मेरे को। सर फ्रेमवर्क एक डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग अप्रोच है where we just define like what needs to be accomplished. We leave everything on framework to decide how the work is to be accomplished. Very nearer, but still I am not placed. Anything? So in framework we already, so in framework we already have already have defined the things. We just have to use the function. Yeah. PHP, Now, everything we had given. Right. I am interrupting you. Whatever you said is good. That means in framework where the things are predefined. Can you say me what are that predefined things? A framework is very simple. It's a collection of classes. Predefined classes that is given over there, and predefined object. Thousands of libraries are there given over there. For example, you have done a program in a math. To work with a math, you want to calculate this, to find the, sir has asked you to find the value of sine 30. What you will do? You will write the entire logic. What you will do? You will write the entire logic for writing the sine 30 to get the value of the sine 30 degree. What you will do? Use the Please answer me existing module. Sir, use library. Haven't you used import?
Have you Importing used math import? library. Yes, Yes, sir. using First, import math dot start. Why math? Who is providing the math? Who is providing this math package? That is providing by the Framework. JDK. That is providing by the JDK. What is that JDK? Is a collection of what? The classes and a framework. A collection of classes. Have you done .NET? Hello? No, sir. No, no, sir. sir. Okay, fine. Then no need of talking that one. So right now, this is what a framework means. In very simple, a framework means what will provide you lots of classes. What is the advantage? The advantage is that when you have a lots of classes available with you, when you are writing as a developer, your life becomes easy. You don't have to reinvent the wheel because the wheel is already invented by someone. What you have to do, you have to change the flavor of that wheel. That is what. All of you agreed? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Right? So this is, you have to keep it in mind when you are writing a particular program, why you are writing over here, what are the advantage you are getting. As a student, what happens, you know lots of things. But what is the problem is that you are not able to utilize the things that you have learned. We have teach you the inheritance, but when you create a project, I have seen the students are not even use an inheritance in their project. Why? Because at the time of implementation, they don't know where to implement, but the project is very good. But what happens? You have not utilized the OOPS technology that you have learned. You are not able to get the full flavor of the OOPS. The flavor of the OOPS, we have to get it. Is it clear? So when we are working with an HTML, we require what with an HTML. In HTML, we have a word called DOM. Can you say me what do you mean by that DOM? Anyone? Have you heard the Document word? object manipulation. Document object manipulation. Document? No, it is not document object. It is document object model. model. Yes, sir. It is Sorry. the DOM means document object model. DOM. Document. Can you say me what it is? Why it is required? Okay, no issue. Write it down in your copy if you want. The document object model is an application programming interface for valid HTML, and well-formed XML documents. Document object model is an application programming interface. Application programming interface is the full form of API. API full form is what? Application programming interface. In short, you can also write it API for valid HTML and well-formed XML documents. It defines the logical structure of documents and the way a document is accessed and manipulated. That means whatever we are writing inside that one, the table, whatever we are writing, these are all what? A document element. That's why the entire page of an HTML is known as what? A document. So when you write to a JavaScript, when you have writing to a JavaScript to find an element of a text box, what you write? Suppose we have a text box with an ID txt1 and a name txt1. I want to get the value of the text box using a JavaScript. How can I get it? So document dot get element by id txt1 dot value. Yes, document dot get element by ID. So why we write document? That is what my question is. Then Sir, why it we will write document? search the HTML document. In the HTML Yes, document, that means the entire HTML file is what? The entire HTML file is what? The document. When it becomes a document, when you are writing a particular form, and from the form we have an end form, the entire thing, the elements over there are known as are what? All are an object. Remember, all are an object that we are using over there. So when you are writing over there and using a JavaScript, and from the JavaScript comes the jQuery. All of you have heard the name called jQuery? Yes, sir. Parent object. Yes, sir. Yes, sir. Can you say me what is the difference between a JavaScript and a jQuery? So jQuery is a library for JavaScript. jQuery is a library for
JavaScript. Very good. Why? Because what is the advantage? Why it is created? Sir, Sir, we we get can many make the built-in functions That like hide means, show. you are very good. Thank you. That means what is happening in JS, we have to write a lengthy code. What they have done, they have created a jQuery in which they have embedded that particular code inside one function. Instead of writing that entire document dot get element by ID, I just have to give dollar and then the element ID, and it will work the same thing. Yes or no? Yes, sir. Only one yes, sir. What Yes, about the sir. others? Yes, sir. Yes, yes, yes. Sir, So we are all of interpreting, sir. yes, yes, okay, fine, no issue. Thank you to all of you. So these are the things why I am talking about it, because that's why we come to know why we need a React, what are the things they are providing to you. You may find that in the last 4 or 5 years or last 10 years, there is a revolution in a viewport, mainly in a viewport. What is that viewport? First, we have an HTML4, and then comes the HTML5, and then comes the Bootstrap, and then comes the lots of things over there, Knockout JS. There are lots of JS is coming. Can you say me why these are happening? What is the reason behind it? So to easy the task. To ease the task. That is one of the reasons. Any other reason behind it that you For think? minimizing codes, sir. That is also the part of that. What to ease the code, to minimize the code. What is the reason? Because listen very carefully. When I am working in industry for last 20 years, when I started, we don't have an HTML. When I started my career, at that time there is no HTML. Only the desktop applications are there. When the HTML comes, that is a static HTML. Then from a static, it goes to dynamic. Then from dynamic becomes what? The JSP comes, the .NET comes, the swing comes. Then from the swing, they come to J2E. Lots of changes are happening. Then from now, last 2 to 5 years, you will find there is an Angular JS, there will be a React. Both are competing with each other. Now the React is the number one right now in industry. Why? What is the reason behind it? The reason behind it only is one thing. Sir, Yes, there is the minimization of code. That is the presentation. sir, The minimization of the time. Someone said me when I asked why we need it. That means we don't need the component to be reloaded again and again. We don't want that my server should be hit consequently. What? What we want a functionality should be done very fast with a minimum traffic and with a minimum going and hitting the server and taking it. What they have done, they have created this viewer where what you have to do, you have to embed the things. Who does not know a very good an HTML, who does not know the HTML code. There are many developers who don't know the HTML code. They don't have to write so much HTML code. They can also do it. They can also do it. That means embedding the things or embedding the values with a very minimum code and very easily to write. That is the reason. And another reason is what? The mobile. The very much the thing is the mobile. Nowadays, can you say me how many people open the website in a laptop? There are many people you will find the maximum are now you going and using it using a mobile. That is the reason. And in mobile, you may sign. There are lots of sizes, lots of things, lots of variations. So to overcome these things, to mobile, make it mobile friendly, all these changes are coming. All these changes are related to mainly the mobile application, that is the apps, only the things that is required.
That is because of this app, so that the things become very. Another thing is what? Now the data has increased. Previously, what we have? We have a data that is called a structured data. Then we have also a semi-structured data. But nowadays we have a data that is no more a structured, no more a semi-structured. It is called what? An unstructured data. So to work with these unstructured data, we required what? NoSQL. So when we have a NoSQL, the database concept is also changing, where we have a MongoDB, which they will require for what? The NoSQL. So these are the things we will require, and because of this, what we have to do, we have to overcome with these changes. And time to time, the new changes are coming. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, Yes, sir. NoSQL. NoSQL means where Yes, we sir. don't have to write MongoDB. the SQL query. That is known as MongoDB. And if you go to the big one, there is an Hadoop. That is called what? The big data. Why we need that big data? Then that is not our bread and butter right now. We don't want to know that one, so we don't want to go over there. So right now, I'm just giving you the concept, right? Now, to come to our course, first of all, we should know what are the things we will require. Let me share the screen with you of my screen. Okay, some other screen is ready, so let me share my screen. Can you see the? Hello? Yes, sir. All of you can see the screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now, what I want to do over here is very simple thing. First thing, what are the things required to download for React.js? One, we need to download Node.js. Have you heard about it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Node.js. Yes, sir. And number two, we will require NPM. Visual Studio Code. Visual Studio Code. I am sharing also with you the URLs. The URL to download the Visual Studio Code and the URL to download the Node.js. Okay, all of you can see it? Yes, sir. सर मैसेज में एक बार शेयर कर देंगे सर. इसमें शेयर कर दें, चैट बॉक्स में शेयर कर दें. हाँ जी सर. ओके, मैं चैट बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ. देखो सबको मिला? All of you get it? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Okay. So Yes, what sir. you have to do, you have to download the Node.js and you have to download the visualstudio.com. How you come to know whether your node is downloaded or not?
Sir, version. No. Node space hyphen word V. Hello. Yes. Okay. Node space hyphen V. Right. So all of you know this. So node minus version if you give. And what it will require, it will also require the npm. Right. So what you will do, you will just download it, and then after this you will download the visualstudio.com.download, because these are the two things that we will require for our practical sessions, and we will do all of this in when we are working in a practical. So we need these two things in our machine to be ready. Another thing is that, can you any idea about you? Can you give any idea to me why we need, or what are the features of React? Have you any idea? If you not, obviously I will say you. One page application, sir. Virtual DOM, sir. Creative. What Sir, are the features of React? What are the Virtual features DOM, of sir. React? Creative language. Easily accessible, sir. Okay. So first, write in your place what is React, and then I will say you what are these. React is a declarative, efficient, and flexible JavaScript library. JavaScript library for building user interfaces. React is a declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces. Do you know who have developed React? Sir, Facebook. Yes. Facebook, sir. Very Facebook good, एक employee ने sir. very good. All of you are very knowledgeable. I like it. Thank you. React was developed by Facebook to help the developers and designer to create interactive user interface very quickly. That is what I said you. That means basically a React is for the view. That means if I talk about model, view, and controller, right? So my React is which part? My React is the V part. Is it clear? Yes, sir. So we can say from here in that definition also that React handles the views layer of any application. So from this part we can say React handles the view layer of any application. React is mostly used in large applications where data is frequently changed on user interactions. React is mostly used in large applications where data is frequently changed on user interaction. This is the one of the important part of what is React. That means React is a declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interface. React was developed by whom? By the Facebook to help the developers and designers to create interactive user interface very quickly. React handles the view layer of any application. Currently, we know the pattern that we follow, or the developers that follow, that the pattern of writing the code the developers follow, or the industry, better to use a term called industry follow, that is what the model, view, and controller, and in short we can say it MVC. So React, we can say from here, the React only deals with the view section of an application. React is mostly used in large applications where data is frequently changed on user interaction. We know already what do you mean by declarative. Declarative means where we can declare something
and then what we can use it efficiently and flexibly means we can use it anywhere, and flexibility means there are lots of changes we can do without any interaction and easy to handle. That is what, so basically a React is also what a JavaScript library. Now when we are using a terminology called JavaScript library, can you say me what it means? Any idea? When I'm using a terminology called JavaScript library, what it means? Sir, a Set of library, predefined functions, sir, sir. a library is something which comes with the predefined functions and middleware. Very good. What's your name? What's your name? Sir, Ashutosh. Asutosh. Right. Perfect. I am really a very good answer, and in a very short. What it is, a library means which contains a lots of predefined functions. That means when we say a library, when we see a book library means there is a book library means lots of books will be available. So the user have a choice which book to read. Similarly, when we are talking about over here, a library, that means a developer have a choice to use anything that will be required over there. Again, the terminology I will use, he don't have to reinvent the wheel. The wheel is already invented by someone. What he will do, he will use it and reuse it and do some minimum changes with a minimum or maximum changes with a minimum effort. Maximum changes with a minimum effort, because why, the someone is already invented it. What he will do, he will just go over there and just changes some few things and the things are ready. That is what the advantage of using a JavaScript library. You may say, sir, the jQuery is also there, then why the React? jQuery is also doing the same thing, it is also giving us, but it, the React gives much more than the jQuery, and much more than the jQuery. And the React has some other facility that we will come to know one by one. Is it clear to all of you? Any question from anyone? Any question from anyone? Sir, To I know have what a is question. React? Yes, please. Because when I, yes. Sir, we differentiate Angular and React as the terminologies, that Angular is a framework and React is a library. But Angular is also a library. I have never talked anything about the Angular. Angular is also known as Angular JS, and nowadays it is known as Angular. The JS they have removed, right? All contains, all are what? All contains a JavaScript library. no, sir, that Angular JS was a library. JS Angular was a is a library. framework, sir. That is what I'm saying you. They have removed the Angular right now. Before it is known as Angular JS. Now they called it Angular, and Angular framework. The framework is what? A collection of what? Framework is what? A collection of classes and the object and predefined functions. So they are calling it what is as a framework. That is what the terminology they have changed recently in version 6 and 7 and 8. Yes, sir. Before that, they call it what? They call it as a Angular JS. Sir, but if we see the React, sir, it has somewhat similar structure as Angular for making and generating components. So, Right. sir, why do we consider it as a library, not a framework? Now again, the reason behind it that when we say a framework, a things needs to be developed with a framework, right? So React is still developed by the Facebook. They have not made a change and not they have defined it as a framework. Always remember, when you are using something, that is you are using this something developed by someone, not by you. When they have developed, they have given some technology and they have given something. When the Angular has come, the Angular is also known as what? The Angular JS. But after that, what they have done, they have removed the JS and they have converted it into a framework. But still, the React is not converted into the framework by the Facebook. It has taken it as what? The JavaScript library. But the work is same. Yes, The sir. terminology is changed. Is it clear? The Yes, work sir. is same. The terminology is changed. So that doesn't matter. Even the structure is also the same.
But that's why the React is much more used, and it is very, very, very flexible. I worked on Android also, Angular also, Yes, right? sir. It has too much layerings Sir, and I have a question on flexibility, sir. Yes, say, say. What is the question? Sir, I have learned Angular, and sir I have learned Angular a bit, sir. Just started, sir. Also React, sir. एक प्रॉब्लम मैंने फेस करी कि सर उसमें मैं जब बेसिक HTML और जावास्क्रिप्ट यूज करता था, तो मैं एलिमेंट के बेसिस पे मैं अपना यूआई डिजाइन करता था, सर. मतलब जावास्क्रिप्ट वही होता है ना, एलिमेंट को लेकर हम लोग यूआई डिजाइन करते हैं. बट मैं जब अभी रिएक्ट पे अभी काम कर रहा हूँ, सर, मेरे को अपने कंपोनेंट के हिसाब से सोचना पड़ रहा है, सर. मैं अपना यूआई डिजाइन कर रहा हूँ कंपोनेंट के बेसिस पे. तो सर ये कॉम्प्लेक्स नहीं हो जा रहा, सर? ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जा रहा, सर? कॉम्प्लेक्स बता रहा हूँ. यही चीज समझने का है. आप मेरे को ये बताओ, जब आपके पास ऑब्जेक्ट, पहले आप जो बनाओगे कोई भी एक चीज को, क्लास को लिखोगे, तो उसके पहले आपको क्या जानना पड़ेगा? आप अगर एक क्लास बनाना चाहते हो, सपोज आपको किसी ने कहा कि मेरे को कार बना दो, तो आप किसके बारे में सोचोगे? डायरेक्ट क्लास लिखना शुरू कर दोगे? नहीं सर, ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचेंगे. ऑब्जेक्ट के बारे में सोचोगे. अगर आपको ऑब्जेक्ट के बारे में ही नहीं मालूम, आप क्लास लिख पाओगे? नहीं सर, नहीं लिख पाओगे. तो अगर आप ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छा से जान गए, उसमें क्या क्या जरूरत लगेगी वो चीज लिख दिए, कौन सी आसानी होगी? क्लास लिखना आसान हो जाएगा. आसान होगी ना. क्यों होगी? शुरू में आपको थोड़ी तकलीफ जरूर होगी कि मेरे को इतना कुछ जानना पड़ रहा है, इतना कुछ. लेकिन एक बार जब आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा? लॉन्ग रन का सोचो, हमेशा सोचना चाहिए. डेवलपर जब काम करता है, व्हेन यू वर्क एज अ डेवलपर, यू ऑलवेज थिंक इट इज नॉट द एंड, इट इज जस्ट द बिगनिंग. जब आप डेवलपिंग का में काम करोगे, हमेशा ये सोच के काम करना कि मैं जो कोड लिख रहा हूँ आज, इसमें मेरा कभी भी चेंजेस आ सकता है. तो मैं इस प्रकार से कोड लिखूं कि कल को अगर मेरा बॉस या मेरा क्लाइंट मेरे को कोई भी चेंजेस बोले, तो मैं उसको ये नहीं बोलूं कि सॉरी सर, मैंने तो ये चीज सोचा ही नहीं था, इसके लिए टाइम लगेगा. ओके सर, यू गॉट इट? तो हमें पहले से ही इस प्रकार से प्रोजेक्ट को या कंपोनेंट्स को इस प्रकार से सजा के रखना पड़ेगा कि कल अगर मेरा नया कोई आए, जिसके बारे में आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, और आपको जो काम दिया है वो भी नहीं जानता, तो कल हम उसको विदाउट मिनिमम चेंजेस हम उसमें ऐड कर सकें, एक प्लगइन बना के उसमें ऐड कर सकें, तभी मेरा प्रोजेक्ट आगे चलेगा. वरना मेरा प्रोजेक्ट क्या हो गया? वन टाइम हो गया, स्टैटिक हो गया, वो प्रोजेक्ट को ही नहीं लेगा. यस सर. तो प्रोजेक्ट में ये जो मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ, कंपोनेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? रीयूजेबिलिटी. कि आप एक बार बना रहे हो, उसको बार बार यूज कर सकते हो. जब हमारे पास नया प्रोजेक्ट आता है, क्या कोई भी हम लोग वापस से नया चीज बनाते हैं? We are all our computer person, and we are known as and we have given a tag called lazy hazard. Why? Because हम लोग एक ही काम करते हैं, कट कॉपी पेस्ट. Yes or no? यस सर. तो हम लोग क्यों करते हैं उसको? क्योंकि हमें लगता है टाइम हमें बचाना है, हम दोबारा एक ही चीज को नहीं लिखेंगे. जब आप कोड कर रहे हो, मैंने बहुत अच्छे स्टूडेंट को भी देखा हूँ, जब कोड करता है वो एक ही चीज को, कनेक्शन है, कनेक्शन को बार बार लिखे जा रहा है हर एक जगह पे. क्यों लिखेंगे बार बार? जब मैंने आपको पढ़ाया है कि फंक्शन रीयूजेबिलिटी होता है, कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी होता है, तो आप उसको बार बार क्यों लिख रहे हो? एग्जैक्टली. है ना? चीज मैं सही बोला कि नहीं बोलो? यस सर. जब मैं जानता हूँ कि मेरे पास एक चीज जो मैं बनाया हूँ, उसका मेरा एडवांटेज है. क्या एडवांटेज है? कि मैं उसको रीयूज कर सकता हूँ. तो अगर मैं रीयूज कर सकता हूँ, मतलब क्या हुआ कि मैं जब भी कोड लिखूंगा, तब मेरा दिमाग में ये चीज जरूर रखूंगा कि मैं इसको इस प्रकार के लिखूं कि नेक्स्ट टाइम में इसी को कॉपी करूं, उसमें कुछ भी चेंज आए मैं चेंज करके दे दूं. तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है? 2-3 चीज करनी पड़ती है. एक, नाम ठीक से देना पड़ता है, जो कि हम लोग नहीं देते. नेमिंग कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग क्या करते हैं? ABC XYZ. नहीं, वो C तक ठीक था,
अब जब आप कंपोनेंट वगैरह में आ जाओगे, जब आप जावा में आ जाओगे, जब आप इसमें काम करो, रियल लाइफ वर्ल्ड में आ जाओगे, तब आपका ये नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पैटर्न आपको जब इंडस्ट्री में आप जाओगे, जब आप एक कोड लिखोगे, आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। हम लोग जब स्टूडेंट रहते हैं, कहीं पे बड़ा हाथ का ए लिख दिए, कहीं पे छोटा हाथ का ए लिख दिए, कोई नेमिंग कन्वेंशन फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट पास भी हो जाता है, हमें मार्क्स भी मिलते हैं। लेकिन जब आप इंडस्ट्री ट्रेनिंग मेरे को बोलोगे कराओगे, तो मैं ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि कोई किताबों में नहीं लिखी मिलेगी आपको। ये चीज खाली आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। हम भी स्टूडेंट थे, उसके बाद हम बने हैं, तो डेवलपर में गए हैं, तो मैं वो प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करूंगा। आपको ये चीज अभी से ही बताऊंगा कि ऐसे मत लिखिएगा। आप बोलेंगे नहीं सर ये तो रिजल्ट सही दे रहा है, यस रिजल्ट सही दे रहा है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, इंडस्ट्री आपको वो कोड नहीं मानेगा। कुछ रूल होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे आपने कहा कंपोनेंट, वेरी गुड। अब कंपोनेंट, हमें कंपोनेंट नहीं बनाएंगे तो क्या फायदा, क्या हुआ कंपोनेंट बनाने का, ये जानना पड़ेगा कि कंपोनेंट बनाने का मेरा ये फायदा हुआ, कल को अगर मेरा कोई नया चीज आता है तो मैं उस कंपोनेंट में मिनिमम चेंजेस, कंपोनेंट मेरे को दोबारा नहीं बनाना है, मैं उसमें जाऊंगा, एक तो फंक्शन लिख दूंगा, मेरा काम हो गया। ये सुन लो, बोलो। Sir, React is very useful for hiding the URL of the real page. नो, हाइडिंग ऑफ यूआरएल में उस चीज में अभी नहीं जाऊंगा। क्यों, मैं अभी नहीं Same बोला thing, हूँ। यस, हाइडिंग ऑफ same thing यूआरएल किस लिए? component यस, हम यूज कर रहे हैं अलग पेज पे, तो हम वो कंपोनेंट एंड द पेज को वो शो नहीं करेंगे ना, रिफ्रेश हो रहा ना रीलोड हो रहा। ना रीलोड होगा। ये रीलोड मतलब क्या है? क्यों हम एक ही बार रीलोड करेंगे, बार बार रीलोड नहीं करेंगे? तो कंपोनेंट्स को हम कैसे शेयर करेंगे कि कंपोनेंट मेरा शेयर हो जाए, राउटिंग हम कैसे करेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें यूजर हैं, को प्रॉब्लम नहीं होगा आगे, प्रॉब्लम नहीं होगा आगे, राइट? तो ये सब चीज मैं आपके साथ क्या करूंगा, छोटा छोटा प्रोजेक्ट बना के ही शेयर करूंगा, वरना समझ में नहीं आएगी। थ्योरेटिकली बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल करने जाएंगे बहुत दिक्कत आती है। सो डोंट वरी अबाउट इट। हमें इतना समझना है कि कंपोनेंट तो, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर अभी हम जैसे कि नोड जेएस में सर रिएक्ट जेएस इज वेरी न्यू बेसिक है, तो सर ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा ना? एकदम स्टार्टिंग से। मैं इसीलिए व्हाट इज रिएक्ट से स्टार्ट किया हूँ। देखो, यस सर, थैंक यू सर। otherwise why should I say you what is react? Yes sir, I thank you. am taking entire class, I am saying you on the one thing, whatever I am going to teach, let me share with you, I am going to teach you the React JS. I am here to deliver the React JS. Anyone knows where? To me, no one knows anything. I am starting from the scratch, एकदम from the beginning. That means मैं एकदम शुरू से स्टार्ट करूंगा। व्हाट इज रिएक्ट, रिएक्ट में कैसे लिखा जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, एकदम नए से। ठीक है, तो आप लोग, मैं कुछ ही आवाज ही पा रहा हूँ, बाकी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे यहाँ पे स्टूडेंट है 60 ऑन है, 60 में से 3-4 स्टूडेंट की खाली आवाजें आ रही हैं, और चैट बॉक्स में भी मैं वही देख रहा हूँ, कुछ है कि आंसर लिख रहे हैं। तो प्लीज लेट मी नो ऑल ऑफ यू आर understanding or not. Otherwise, I am in different geographical location, you are in different geographical location, so we have to be coordinate with each other. नहीं तो मैं दूसरे टॉपिक पे जा नहीं पाऊंगा जब तक आप मेरे को ये नहीं बताओगे कि हाँ ये आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू सर, लिखा है मोहम्मद सबर। थैंक यू मोहम्मद। यस सर, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कुछ भी समझ में नहीं आया, वेरी फर्स्ट डे ऑल ऑफ यू, वी डोंट नो ईच अदर ऑन द वेरी फर्स्ट डे। मैं आपको इतना ही बोलूंगा, कुछ भी समझ में नहीं आए मेरे से 10 बार पूछिएगा, मैं बताऊंगा, लेकिन 11वीं दफा जब मैं पूछूं तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे को आंसर दो। इज इट क्लियर? ओके सर, यस सर। लेकिन आप लोग कभी भी हेजिटेट मत कीजिएगा मेरे से ये पूछने में कि सर दोबारा बोलने पे गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, मैं यहाँ पे आपको आया हूँ पढ़ाने के लिए, मेरा एक ही मकसद है कि आप सीखें। अगर आप सीखोगे नहीं तो मेरा पढ़ाने का फायदा कुछ भी नहीं है। इज इट क्लियर? Is it clear to all of you? So on the very first day I say you, अगर मैं आज पढ़ाने के बाद कल आपको बोलता हूँ कि कोई आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आप मेरे को बोलते हो कि नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं ऐसा टीचर हूँ, मैं आपको साफ बोलूंगा इसका मतलब आप नहीं पढ़े हो। मैं सीधा बता रहा हूँ, इसका मतलब आप नहीं पढ़े हो। अगर घर पे पढ़ते तो क्वेश्चन जरूर होता। क्यों कि 5 घंटा क्लास करने के बाद आप घर पे नहीं पढ़ोगे, अगले दिन आओगे क्लास में बोलोगे हाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब वो 5 घंटे के बाद आपने कुछ नहीं पढ़ा। पढ़ोगे तो क्वेश्चन जरूर आएगा।
और क्वेश्चन अगर आएगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन में ही आप सीख पाओगे। यस और नो? Yes, I will summarize React.js. So what do you mean by React.js? In simple and very simple, I can say a React.js is a declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interface in one line. In one line, I can say it, that React is a declarative, efficient, flexible JavaScript library for building user interface. Now, what are the features of React? What do you mean by open source? Sir, open source projects are somewhat where everyone can contribute towards its progress. It is not constrained towards only the company, but the real world developers can also contribute to its bugs and issues. यस सर, बार बार अपडेट होता रहता है सर। बार बार अपडेट होता रहता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जिसके कारण ये पॉपुलर होता है। देखो आज हम लोग के पास कंपनी को पहले क्या करना पड़ता था, जो भी चीज डेवलप करते थे सबका पैसा लगता था। इसलिए अगर आप डेवलप करने जाओगे तो आप अगर खरीदना पड़ेगा, आपको लाइसेंस पैकेज खरीदना पड़ेगा। ओपन सोर्स बन जाने से क्या होता है, इट इज फ्री। और इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है रिएक्ट जेएस की, कि ये आपका ओपन सोर्स ऐसा है कि इफ यू डेवलप इट यूजिंग दिस डेवलप एंड यू आर डेवलपिंग फॉर योर प्रोफेशनल पर्पस, देन आल्सो इट इज फ्री। Is it clear? Then also it is free. That means when you are developing it for professionally, for example, एक .NET है जिसका भी फ्रेमवर्क है, अगर मैं प्रोफेशनली उसको यूज करता हूँ, it is not free. But in this case, if you are using a professionally, that means it is also free. Ideal for large and single page application. देखो मैंने आप लोगों ने ना बहुत जन ने कहा मेरे को कि सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए ही सिर्फ ये यूज होता है। नहीं, ये गलत है। खाली सिंगल पेज के लिए रिएक्ट या एंगुलर ये सब यूज नहीं होते। A large application is also built using a React. आपने नेटफ्लिक्स का नाम सभी ने सुना होगा। All of you have heard the name Netflix. Yes, sir. नेटफ्लिक्स में एक ही पेज है क्या? नेटफ्लिक्स में एक ही पेज है? नो सर। नहीं, तो नेटफ्लिक्स किससे बना हुआ है? रिएक्ट जेएस। In a Netflix, they have used a React.js. Okay. Right. That's why it is also ideal for what? Large and single page application. Another feature is what? Let me write for you. Let me write for you. Then it will be easier for me to discuss with you. Features of React. All of you can take the screenshot of this one. What is that one? Open source. Developed by whom? Developed by Facebook. Right? Do I need to explain this part? No, sir. No, sir. Okay, fine. Then idle for application and single page application. Do I need to explain this part? For the second point, I would like to add, sir, you said for large application and gave the example of Netflix. Sir, Yes. But in React.js, we consider it as a single page because it is rendering all the components on a single page, that is index.html. So, sir, in our Netflix also, sir, it is also rendering the components over the index.html, which is a single page, and it is not been reloading again and again. Right. That means what? I want to say that it is not a single page. There may be the other components are going on. There is a link. यस सर, बट लास्ट में तो index.html ही तो एक्सेस हो रहा है सर। लास्ट में आने के बाद वो उसमें आ रहा है, लेकिन मेरा एप्लीकेशन तो एक पेज पे नहीं है।
मेरा प्रोसेसिंग तो बहुत जगह पे हो रहा है ना. It has तो multiple सिर्फ pages with multiple components and मल्टीपल, they are but doing it is rendering on the HTML. rendering on the HTML, right? तो सिंगल पेज एप्लीकेशन खाली बनेगा ये नहीं बोल सकते. हम लोग एक बड़ा एप्लीकेशन भी बना सकते हैं. सिंगल पेज जब आप टर्म यूज करते हो ना, उसका मतलब एक ही पेज का एप्लीकेशन हो गया. बात को समझो, समझ में आया? Okay. Okay. सिंगल पेज जब आप बोल रहे हो ना, तो मतलब क्या हो गया, एक ही पेज में एप्लीकेशन मेरा खत्म हो गया. वैसा नहीं है. इसके साथ बहुत सारे पेजेस रिलेटेड है जो कि रेंडर्ड एक ही जगह पे हो रहे हैं. Yes, sir. Clear up? Using React, we can create. What we can create? Using React, we can create the mobile application for Android, mobile application for iOS, and also for Android. Mobile application for Android and also for iOS. सर तो रिएक्ट इसके नेटिव भी है क्या Sir, सर? React Native is a different thing than React, sir. हम आ रहा है रिएक्ट में ही, हम रिएक्ट नेटिवली लिख रहे हैं. ठीक है, इट इज अ Okay, sir. पार्ट ऑफ द रिएक्ट. Yes, sir. फीचर्स ऑफ रिएक्ट, राइट? लेट्स मेक इट सिंपल. लिख दो रिएक्ट का फीचर्स. तो इसमें ये क्या आ जाएगा, हम इसको रिएक्ट. अब ठीक हो गया, Yes, sir. सर. right? Now these are the features of the React, right? Now what are the other features? The other features is React uses reusable component, so we don't need to write the same multiple times. Is it clear? React uses Yes, sir. React reuse what component, so we don't have to write again and again. Any question from anyone? सर ये No, sir. रीयूजेबल वाला कॉन्सेप्ट है जो हाँ, सर ये बाकी चीज में तो भी हो सकता है ना, जैसे कि हम एक पेज बना लेंगे और उसको हाँ, हाँ. साइड में रख के हम दूसरे प्रोजेक्ट में भी तो सर लिंक करके कर सकते हैं ना सर. हाँ, आप कर सकते हैं. तो सर स्पेसिफिकली रिएक्ट के लिए क्यों बोलते हैं कि सिर्फ इसी में रीयूजेबल बता कंपोनेंट्स रहे होंगे? अब हम जो आप पेज बना रहे हो, वो पेज एक पेज को आप दूसरे पेज से लिंक बना के कॉल करा रहे हो, तो Yes, वो sir. सेम पेज तो नहीं है ना, वो तो दूसरा No, sir, पेज हो no, sir. गया. Yes, असल sir. में Yes, इसमें sir, क्या yes, हो sir. रहा है, इसमें तो वही पेज है. जैसे आपने क्या कहा, एक बार आपने कहा कि भैया मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. आपने एक पेज बनाया जिसमें क्या होगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट होगा, क्रूड होगा. क्रूड मतलब क्या होता है कि क्रिएट भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे और व्यू भी करेंगे. ठीक है, Yes, sir. तो हम जब क्रूड एक बनाएंगे, तो हम लोग अभी तक जब प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें कितना पेज बनाते हैं? इंसर्ट के लिए एक, एडिट के लिए एक, डिलीट के लिए एक, व्यू के लिए एक. ये सुन लो ऑल ऑफ यू, Yes, sir, yes, sir. राइट? अब हमने क्या किया, हमें एक ऐसा एप्लीकेशन मिला जो हमें कहा कि भैया आपको 5 पेज बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही पेज बनाओ, आप उसमें जब जो काम करना चाहते हो वो काम उसी पेज में होगा. तो कौन सा आसान हुआ? React, sir. रिएक्ट आसान हुआ. क्यों? आपको Yes, sir. 5 पेज को याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ फंक्शनलिटी बनानी है. ऐड एक फंक्शनलिटी बनाए, एडिट एक फंक्शनलिटी बनाए, व्यू एक फंक्शनलिटी बनाए, अपडेट एक फंक्शनलिटी बनाए, इंसर्ट एक फंक्शनलिटी बनाए. अब आपने क्या किया, उसको जब जिसको चाहिए उसको कॉल करा लिया. तो कौन सा आसानी हुआ? React, sir. फंक्शन क्रिएट हो जाते हैं, हाँ सर. कॉल that is what the React is. That is called what? The component reuse. ओके सर, ओके सर. Is it clear? Yes, React sir. reuse component, so we don't have to write the same thing again and again or the multiple time. Easy to understand. इसमें जो हम लोग क्या लिखते हैं, जो हम लोग सिंटेक्स लिखते हैं, React easy to understand JSX. क्या लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? JSX सिंटेक्स बोलते हैं. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं JavaScript X, JXX SYN X.
सिंटेक्स। यस सर, HTML और JSX में डिफरेंस क्या है सर? बता देते हैं। हमेशा याद रखना HTML मेरा क्या है, एंड HTML is a page that is called what, and static page that is called what, and hypertext markup language। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपने जब क्वेश्चन मेरे से किया है, इसको हाइपरटेक्स्ट क्यों कहा जाता है? हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्यों बोला जाता है कि ये हाइपरटेक्स्ट है? आप अपने दोस्त को कभी बोले वो हाइपर हो क्यों हो रहा है? हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर, यस सर। आप अपने फ्रेंड को कभी बोले हो आप हाइपर क्यों हो रहे हो? कोई तो बोला होगा हाइपर क्यों हो रहा है? यस सर, यस सर। क्यों बोलते हो? सर वो सब टेंशन गुस्सा। That means when he is something and doing some unusual thing, yes or no? कि वो जो स्वाभाविक से ज्यादा हो गया, yes or no? जो उसका नॉर्मल है वो नॉर्मल से ज्यादा हो गया, राइट? Yes, sir. जी सर। तो when I am saying hypertext, इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्स्ट है, टेक्स्ट से ज्यादा हो गया। तो अब आप बोलोगे सर वहां पे तो समझ में आया कि वो नॉर्मल था, नॉर्मल से ज्यादा हो गया, गुस्सा हो गया। अब ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट से ज्यादा हो गया, खूब सहज है। टेक्स्ट से ज्यादा हो गया का मतलब क्या हुआ कि खाली मेरा टेक्स्ट है, नोटपैड है, उसमें आप खाली टेक्स्ट लिख सकते हो। ये सुन लो, हम नोटपैड में खाली टेक्स्ट लिख सकते हैं। yes, मेरा टेक्स्ट हुआ। अगर मेरे को नोटपैड में हम कल को मेरे को आ जाए कि हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, हम वीडियो भी डाल सकते हैं, हम इमेज भी डाल सकते हैं, हम हाइपरलिंक भी डाल सकते हैं, तो क्या वो खाली टेक्स्ट रहा? नहीं, something more than a text. That is why it is known as hypertext. Why? Because it is not only contain a text, but it also contains what? A video file or an images or a sound. Each and all of these makes it what? Something more than a text. All of it. Is it clear to all of you? Yes sir, yes sir. Yes sir. Thank you. Yes, sir. And at the same time, we say it markup language. हम उसको क्यों बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज? ये मार्कअप का मतलब क्या है? देखिए, मैं जब पढ़ाऊंगा आपको, मैं ये चाहूंगा कि मेरा स्टूडेंट से अगर कोई पूछे, कोई भी चीज पूछे तो वो बोल पाए, राइट? ये सुन लो, अगर आपको HTML आप बहुत अच्छा पेज बना लिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अगर ये चीज जानते नहीं है तो जानना चाहिए। तो क्या है मार्कअप, हम क्यों बोलते हैं? आप हमेशा याद रखिएगा, जब हम लोग वर्ड करते हैं या हम लोग वर्ड में जाके कोई फॉन्ट चेंज करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? हेलो, एट्रीब्यूट लिखते हैं सर, एट्रीब्यूट। नहीं, हम लोग मैं वर्ड में गया, मैं HTML में जाऊंगा ही नहीं, मैं वर्ड में गया, मेरे को किसी भी चीज को फॉन्ट चेंज करना है तो मैं क्या करना पड़ता है सर? ऑप्शन होता है, सिलेक्ट करके फॉन्ट साइज सिलेक्ट करना पड़ता है। नहीं, मैं इतना ही जानना चाहता हूँ, सिलेक्ट करना पड़ता है। तो सिलेक्ट का क्या होता है? एक स्टार्ट होता है और एक एंड होता है। एम आई राइट? Yes, sir. रिमेंबर, लिसन वेरी केयरफुली टू माय वर्ड्स, राइट? तो मैं क्या किया, मैंने सिलेक्ट का एक स्टार्ट लिया और एक एंड किया। अब मैंने कहा बोल्ड, तो वो स्टार्ट और एंड में बोल्ड हो गया। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब जो है मैं आ गया, मैंने कहा मार्कअप। मैं क्या कहा, मैं कहा कि मैं जो है ये मार्क कर दूंगा। मेरे पास सिलेक्शन करने का नजरिया नहीं है, मेरे पास सिलेक्शन करने का फैसिलिटी नहीं है। मेरे को कुछ टैग्स दिया गया है। They have given us some tag. What are those tags? There are two types of tag. One is called a pair tag, another one is called an orphan tag. So मैं वो टैग यूज करके मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको मार्कअप कर देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, जहाँ पे मेरे को बोल्ड चाहिए मैं एंगुलर ब्रैकेट के भीतर बी लिखूंगा और एक एंगुलर ब्रैकेट के भीतर स्लैश बी लिख के उसको बंद कर दूंगा। मतलब दैट इज माय सिलेक्शन क्राइटेरिया कि मैं यहाँ से यहाँ तक बोल्ड चाहता हूँ। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? अ मार्कअप। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। थैंक यू। देन उसके बाद आ जाता है कि हम इसे लैंग्वेज बोलते हैं। क्यों इसे लैंग्वेज कहा जाता है? मैं नहीं बोलता ये चीज, जबकि ये क्वेश्चन आया इसलिए मैंने ये चीज बोला। मैं ये चीज सोचा था आप लोग जानते हो, क्योंकि HTML में मैं नहीं गया, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आया HTML और JS में क्या डिफरेंस है, इसलिए मेरे को इसमें जाना पड़ा। अब मेरे को बोलो इसे लैंग्वेज क्यों कहा जाता है?
इसे इसलिए लैंग्वेज कहा जाता है। आप जब इसको कंपाइल करते हो, कंपाइल करने के बाद कोई भी लैंग्वेज का क्या काम होता है, उसमें कंपाइलेशन होता है। कंपाइलेशन करने के बाद वो हमें एक आउटपुट देता है, दे गिव अस वन आउटपुट। तो वो आउटपुट क्या होता है, the things that we have written and it is giving the output of that. फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है प्रिंट एबीसी, तो आउटपुट में प्रिंट नहीं आता है, उसका आउटपुट आता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एन एबीसी। तो जब आप बी लिखते हो और बी से एंड करते हो तो उसका आउटपुट आता है आपके पास, वहां पे बोल्ड हो जाता है। तो हु इज द कंपाइलर, दैट मींस समवन इज कंपाइलिंग दैट बी एंड स्लैश बी इनटू दैट पर्टिकुलर बोल्ड। So the browser is your compiler who is compiling your tags and giving you the output. Am I right? All of you Yes, sir. agreed? All Yes, of you sir. agreed? Yes, sir. Okay, Yes, sir. thank you. So इसीलिए आप देखो होगे कि कभी आप कोई टैग देते हो, समझो बी के साथ आपका कॉमा गिर गया या बी में बी के साथ 1 गिर गया, आप सपोज यू आर प्लेइंग विद द टैग, आप देखोगे वो उसी चीज को प्रिंट कर देता है। मेरे को बोल सकते हो क्यों? वो आपको कोई एरर नहीं दिखाएगा, लेकिन एक आपको क्या करेगा, वही चीज को प्रिंट कर देगा। तो आपका मेरा क्वेश्चन आपके ये होना चाहिए कि जब मैं उसको लैंग्वेज बोल रहा हूँ तो जब वो कंपाइल कर रहा है तो वो मेरे को एरर क्यों नहीं दिखाता है? एरर नहीं दिखा के वो क्या करता है, उसी चीज को प्रिंट कर देता है। बोल सकते हो क्यों? रेंडरिंग होता है सर, मतलब अगर उसे समझ में नहीं आ रहा तो जैसा है वही दिखा देता है। Very good, very good. Why? Because it will take it then if it does not understand, very good. If it does not understand, it will take it as a text. Simple. वो उसको किस हिसाब से पढ़ लेता है? टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ लेता है। तो टेक्स्ट तो मेरा कुछ भी हो सकता है, तो उसको वो टेक्स्ट हिसाब से दिखा देता है। So that is what hypertext markup language. अब ये जो HTML है, whenever we use an HTML, and HTML means a static page. All of you I think can understand what do you mean by static. Static मतलब जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, वो जो लिख देंगे वही रहेगा। जो हमारा पहले शुरू में जब HTML आया तब था। आस्ते आस्ते डिमांड बढ़ता है, because the requirement always changes. If the requirement stop, development stop. That's why a requirement always changes. तो रिक्वायरमेंट डे बाय डे चेंज हुआ, चेंज होने के बाद रिक्वायरमेंट आया डायनामिक। तो जब फर्स्ट रिक्वायरमेंट आया डायनामिक का, तो डायनामिक उस समय सर्वर और क्लाइंट का कंसेप्ट नहीं आया, सबसे पहले बनाया गया जावास्क्रिप्ट टू मेक द थिंग्स डायनामिक। तो जावास्क्रिप्ट इज व्हाट, अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट विल बी रन ऑन द HTML। तो मतलब क्या कहा गया कि अगर HTML से आप काम करना चाहते हो तो आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक लिख सकते हो उसके भीतर, जो कि आपको प्रोग्राम को क्या कर सकता है, कुछ हद तक डायनामिक कर सकता है। तो जब हम लोग करते थे उस समय वो कुछ हद तक डायनामिक क्या कर सकता था कि आपका फॉन्ट साइज बढ़ा देगा, आपका फॉन्ट का साइज छोटा से बड़ा कर देगा, हम एक लूप चला के कर सकते हैं। दीज आर द थिंग्स मेक डायनामिक। इज इट क्लियर? So what is the JS? A difference between the HTML and the JS. The difference between the HTML and the JS is that an HTML is a page where you can write the HTML codes, and the JS is a scripting language. Remember, a JS, you should use a term called scripting language that will be embedded inside an HTML. Simple. कहाँ पे embed होगा? वो embed होगा आपका किसके भीतर? HTML के भीतर। उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? We can do some functionality and we can make some bring some dynamic to the HTML page. Any question from anyone? No, sir. All of you understand this part? Yes. Yes, sir. So, yes. So we can say in short, we use HTML just to format the text, right? Yes. HTML is only used to format the text. HTML is used just to show the things how it is. That is the static. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर से दूसरा चीज लाते हैं, लाके उस पेज में देखिएगा आपका कैप्शन चेंज नहीं होता है, खाली वैल्यू चेंज होती है। That is why we make it work a dynamic. That means the values are not coming not in an HTML, they are embedded with some other things who are making it dynamic. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. One way data binding. The another feature is known as what? The one-way data binding.
What do you mean by the data binding? Sir, what do you mean by JSX syntax? That we will learn. Right now we have not learned, so not say. That means the syntax that we are going to write over here, that means the syntax that we are going to write in React.js will be what type of syntax? JSX. And that syntax we will learn how to write it. Is it clear? Yes, sir. So what we will say, one way data binding का मतलब? Sir, data binding is something when you are producing data from one end to another. Like there is one way data binding when you are by triggering some function, you are binding data towards the backend. And two-way means if you are giving some instruction and from the backend also it is rendered towards the front end. That is the two-way data binding. Let's make it very simple. Right now we are going to know the features. So when I am saying the features, what you will say कि सर आपने कहा था वन वे डेटा बाइंडिंग, आप पढ़ा रहे हैं, आप उसमें थोड़ा दिखाइए ना वन वे डेटा बाइंडिंग क्या होता है, ये सुन लो. हेलो ऑल ऑफ यू एग्री? Yes. है ना? तो वन वे डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ कि एक साइड से मेरा डेटा आएगा और डेटा को बाइंड करना मतलब क्या होता है. तो सपोज मेरा एक प्लेस है, आई हैव वन प्लेस. I have a place over here. Let's put it like this. I have over here a text box. What I want, I want some data inside it. I want some data inside it. And this data will become from some other place. So what I have to do? I have to take that data and bind that data with this particular component. Bind that data with this particular component. जैसे आप देख सपोज अपने कॉलेज की वेबसाइट में जाओगे, आपका कोर्स का जो नाम रहता है, देखना एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में सारे नाम आ जाते हैं. ये सुन लो. हेलो. यस सर. यस सर. तो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में जो सारे नेम आ जाते हैं, कैसे आ रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है? That means you have a database. That means you have a database from where you are collecting it and binding with that combo box. तो combo box में क्या आ गया? वो सारे नाम आ गए. Is it clear? Yes, sir. That is called what? The data binding. Why one way? That we will come to understand. That's what we are here for. Supports SEO. What do you mean by the SEO? 7 number point. Search engine optimization, sir. Search engine optimization. Supports SEO. Now, this is nowadays when you develop a website, this is also one of the main reasons when you develop as a developer, when you are working, you have to keep it in mind, the supports SEO. You may say कि सर क्लाइंट ने नहीं कहा है, कल कहेगा, तो आप क्या करोगे? वापस से कोड लिखोगे? एक चीज हमेशा ये याद रखना कि क्लाइंट कुछ भी नहीं कहता है. हमें जब डेवलप करेंगे, हमें अपने आप को सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इस चीज को डेवलप करें कि कल मेरा क्लाइंट अगर मेरे को बोले इसमें ये चीज करना है या मैं उसको सजेशन दूं तो मेरा प्रोजेक्ट और बढ़ेगा. दो चीज होता है, एक क्लाइंट बोलेगा या आप उसको बोलोगे, वरना आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? स्टैटिक हो जाएगा. आपको तो काम करना है, आपको पैसा कमाना है. आप यहाँ से कुछ सीखोगे किस लिए? या एक जॉब करोगे या खुद एक जॉब किसी को दोगे या खुद एंटरप्रेन्योर बनोगे. तो इसके अलावा और तो कुछ हो नहीं सकता. तो जब आप काम करोगे या काम करवाओगे तो आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि मैं जो ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूँ, when I am developing this project should be developed in such a way that tomorrow if any changes come, I can make it perfectly. So you will say me sir क्या प्रॉब्लम होगा अगर हम शुरू में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में नहीं सोचेंगे? हाँ, प्रॉब्लम क्या होगा? When you work with a search engine optimization, there are certain rules that you have to follow. कैसे? एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बताता हूँ. आप लोग सब कोई लिखोगे IMG टैग. Have you used the IMG tag? All of you in HTML? Yes, sir. Yes, sir. That Yes, is sir. an IMG tag we will use like this. IMG SRC is equal to Name of SRC is the equal image. to
my name.png, my name.png, and then what you do, you will just do it. What will happen? What will happen? What will happen? There is no issue, there is no problem, your code is working, the client is happy, the things is coming. Now tomorrow the client says that I want my this particular one to be the search, that it should be a search engine optimization. When you work with the search engine optimization, it has certain rule. What is the rule you have to follow? You have to give a title. You have to put a title over here. That means the image is search title. Then what you have to say, you have to give at least and slash over here, end over here, and then you have to give an ID is equal to, and then you have to give a name is equal to. अगर आप ये नहीं दोगे तो आपका जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जब आप गूगल को दोगे तो आपका गूगल बोलेगा देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन योर कोड, यू हैव टू चेंज इट एंड यू हैव टू डू इट अगेन. तो आप सोचिए ये आप कितनी जगह लिखोगे, वो सब जगह आपको चेंज करना पड़ेगा. इसीलिए जब आप कोड लिखोगे at that time you have to have an habit that these are the certain rules that I have to follow when I am writing a website. Is it clear to all of you? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ये सब चीजें हर टैग में लिखते हैं क्या, मतलब Yes. बाकी ये टैग्स आप में? यही चीज मैं आपसे आप लोगों को सुनना. Yes, as a student I also think that कि क्या जरूरत है, मेरा तो काम तो कर रहा है ना, क्या जरूरत है मेरे को लिखने का, हर टाइम क्यों लिखेंगे? इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक रूल होता है, एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है. नहीं करोगे तो भी चलता है, लेकिन बाद में जब आप छोटे में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जब आप बड़ा होने जाओगे तब प्रॉब्लम होगा. तो उसमें कोई चीजें डालनी है, आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके आपको अपनी वेबसाइट को टॉप 10 में दिखाना है तो आप नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि सर्च इंजन जो है बहुत कुछ काम करता है, कीवर्ड्स पे काम करता है. आपकी वेबसाइट में जो आपका HTML लिखा हुआ है, जो कोड लिखा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर डिपेंडिंग. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Yes sir. Yes sir. So this is also the one of the part. Does not use shadow DOM right now. I don't going into that one, right? So what we have this is called what these are the features of what, these are the main features of React, and that is what is React. Now what we can say, so what is the main concept of React? The main concept of React is, have you heard the word called virtual DOM? Yes sir. Yes sir. Can you say me what do you mean by that virtual सर DOM? सपोज हम कमेंट करते हैं किसी वीडियो पे तो तभी के तभी अपडेट हो जाता है सर, कमेंट वगैरह. तभी अपडेट हो जाता है, right? So what it means, the DOM manipulates is the heart of modern application. समझ में आया? जैसे आप देखो फेसबुक, आप फेसबुक में कमेंट करते हो ना? हेलो? Yes sir. Yes sir. तो अलग अलग कंपोनेंट है ना, और तो हर क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है. That is what the React is what about. तो आप एक चीज जगह पे हेडिंग दे सकते हो, वर्चुअल डोमेन. वर्चुअल डोमेन में हम लोग क्या बोलेंगे? React is a lightweight and fast in rendering the view. कि React क्या है कि मेरा व्यू को रेंडर करने में उसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है. इट इज वेरी फास्ट टू रेंडर. द मेन कंसेप्ट ऑफ React is virtual DOM. The main concept of React is virtual. What is that? DOM manipulates is the heart of modern application. What do you mean by DOM? The DOM full form is Document Object Model. Document Object Model are the structures of the HTML, and XML elements that are used to make web page. जब आपने XML बोला है सर, XML का मीनिंग क्या है इसमें? बोल लिख लो, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज. HTML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज. Sir, what does it mean by render or rendering? रेंडरिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कोई भी चीज को देते हैं ना, आप जैसे है, आप जब ये टैग लिख रहे हो, आपने लिखा कि /b
और उसके बाद आपने दिया बी और उसके बाद दिया कुछ लिखा, लिखने के बाद स्लैश बी दिया, तो इसको कोई पढ़ रहा है ना, ये बी को कन्वर्ट कर रहा है ना बोल्ड में, ये सुन लो, हेलो, ये बी को तो कोई कन्वर्ट कर रहा है ना, तो हम जो कुछ लिख रहे हैं उसको जो चीज में जो कन्वर्ट कर रहा है उसी को कहा जाता है रेंडरिंग। रेंडरिंग का मतलब क्या हुआ कि आप एक चीज लिखे हो विद इन डबल कोट्स, विद इन कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के भीतर ने आपने अपना नाम लिखा है, जब वो आउटपुट दिखा रहा है तब, लेकिन वो कर्ली ब्रेसेस नहीं दिखा रहा है, उसकी जगह पे वो कुछ आउटपुट, उसकी जगह पे उसको आपको कुछ अलग दिखा रहा है। दैट इज नोन एज व्हाट द रेंडर, कि उसको क्या किया, उसने रेंडर किया, पढ़ा, प्रोसेस किया। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, sir. So DOM manipulation is the heart of modern application. DOM are the structure of HTML and XML elements that are used to make web page. DOM manipulation is the process of, this is very important, DOM manipulation is the process of reading and writing data to the HTML DOM. बस इसको अगर याद रखोगे तो बाकी सब भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि डोम मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? डोम मैनिपुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग द डेटा टू एचटीएमएल डोम। समझ में आया कि नहीं? हेलो ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर, यस सर। कोई भी ऐसा है जिसे ये चीज समझ में नहीं आया हो? Okay, fine. All of you are saying yes, sir. Thank you, thank you. So, what it means? That means we have to remember only the keyword. मैं नहीं चाहता कि आपको पूरा definition याद रखो, नहीं, हमें कुछ keywords याद रखने पड़ते हैं. What is that in virtual domain? In virtual domain, I can say domain manipulation. I can say DOM manipulation. DOM manipulation is the process of reading and writing. What? Reading and writing what? Reading and writing what? Reading and write. No, reading and writing what? Data. Reading and writing the data. Data to where? Reading and writing the data to the HTML DOM. Is it clear? Can you name one HTML DOM? Reading and writing data to the HTML DOM. Can you name one HTML DOM? Hello? Hello? And what is virtual DOM? That is the virtual DOM. That means in a virtual DOM, what we mean when we use this, that is what we have to write it using a JavaScript. I am coming to that part, right? I am coming to that part, right? One by one. What do you mean by the virtual DOM? So when I am saying this, what I am saying, reading and writing the data from an HTML to what? The DOM. Let me do like this. Now it's perfect. Is it clear now? Now what I want. I am saying over here the HTML. I am giving over here a read. And I'm saying over here, the JavaScript.
That means, let me write more clear over here. I say over here, div id is equal to div1. Sir, not able to see what Not are you able to writing? see. Okay, सर okay, थोड़ा no स्क्रॉल problem. कर दो सर। मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा दे रहा हूँ। Yes, sir. व्यू जूम, ये आप लोग थोड़ा सा मेरे को बता दीजिएगा। नाउ इट्स क्लियर। सर स्क्रॉल कर दो सर थोड़ा सा, नीचे कर दो सर। अब ठीक है, नीचे कर दो सर, वो Sir, पेज scroll down. अरे तो और अब ठीक है। No, sir. नीचे कर दो, नीचे अब देखो, अब तो एकदम नीचे कर दिया। स्लाइड को नीचे सर। सर स्लाइड नीचे? मूव नहीं हो रही है सर, स्लाइड मूव नहीं हो रही है। सर स्लाइड नीचे नहीं हो रहा है सर। सर साइड में स्लाइडर है ना सर, उससे लॉन्ग प्रेस करके नीचे कर दो सर। एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ठीक है। सर रीओपन करो फिर से, मे बी। सर स्क्रीन शेयर स्टॉप करके फिर से करना, वो कभी कभी हो जाता है जूम में। अच्छा एक मिनट रुको, मैं स्टॉप करके वापस शेयर करता हूँ। यस सर। अब सही है? Yes. सर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, div id is equal to div1। अब मैंने यहाँ पे कहा मुश्किल ही है ना मेरे। अब मैंने यहाँ पे कहा पानी भी नहीं लेके आंदा यार, तो HELLO हेलो। अब मैं यहाँ पे /div कर दिया, राइट। देखिए, मैं आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि मैं ये JS से पढ़ूंगा, पढ़ के वैल्यू को JS से कैसे वैल्यू को पढ़ूंगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं यहाँ पे लिखूंगा, डॉक्यूमेंट में DC लिख सकता हूँ शॉर्ट में। यस सर। DC डॉट श्योर सर, गेट ELE गेट एलिमेंट बाय ID, फिर मैं ब्रैकेट दूंगा, देने के बाद क्या बोलूंगा, div1, राइट। डॉट क्या बोलूंगा, डॉट बोलूंगा HTML। एनी क्वेश्चन? डॉट में क्या बोलूंगा, डॉट में बोलूंगा HTML। तो क्या होगा मेरा, वो पढ़ लेगा। नो, अब अगर मेरे को वापस उसमें मेरे को कुछ लिखना है HTML की जगह पे, राइट, मेरे को HTML की जगह पे कुछ लिखना है। I have to write something in place of HTML. Can you say me what I have to do? I am copying डॉट it. वैल्यू। एक मिनट जरा सा, मैं थोड़ा सा ना एक चीज कर लूं तो आपको आसानी होगी, मेरे को भी। तो मैं यहाँ पे आया, मैं इसको भी कॉपी कर लिया। तो अब ये रीड की जगह पे मेरा क्या हो जाएगा, रीड की जगह पे हो जाएगा राइट। यस और नो? मैंने कहा था ना रीड एंड राइट, तो रीड एंड राइट हुआ। तो अब मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहता हूँ तो मेरा ये कोड में क्या चेंज करूंगा बताओ। मेरे को लिखना है वेलकम टू माय React.js day 1। वेलकम टू माय React.js day 1। इनर HTML। हाँ, तो HTML के भीतर, तो मैं HTML के भीतर में क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे P दे के लिख सकता हूँ, विद इन P वेलकम टू माय React.js day 1 लिख सकता हूँ। हेलो ऑल ऑफ यू। यस सर। ठीक ना हुआ? तो मेरा ये रीड भी हुआ, राइट भी हुआ। तो उसने मेरे से क्वेश्चन करा ना कि सर वर्चुअल डोमेन्स में कहाँ आया, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ, when we change any element, this means we change the classes and change the attributes when we are writing the domain. When we repeat this process multiple times, it will render the element each time. That makes the application little bit slow. Yes or no? बोलो, अगर मैं इसको continuously करता रहूंगा तो slow होगा कि नहीं? यस सर, होगा। Yes. Now React makes some changes to overcome this solution and making the process fast. What they have done? उन्होंने क्या कहा कि HTML को रखा। मैं पिक्चर बाद में बना रहा हूँ, पहले मैं बता दे रहा हूँ, फिर मैं पिक्चर से समझा दूंगा।
पहले उसने क्या कहा, ऊपर में HTML को रखा, बीच में रेंडर को रखा कि HTML के पास जब आ रहा है तो JS के माध्यम से नहीं आ रहा, उसके बीच में रेंडर हो रहा है। तो रेंडर जिस जगह पे हो रहा है, जो करके उसको भेज रहा है, उसका नाम है रिएक्ट वर्चुअल डोम। हेलो हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें क्या हो रहा है, बीच में मेरा एक तो क्या है, रिएक्ट का वर्चुअल डोम है, जो क्या कर रहा है, जावास्क्रिप्ट से लेते जा रहा है और HTML को क्या कर रहा है, देते जा रहा है। तो अब मेरा मिडिल मैन जब आ जाएगा बीच में, तो वो चीज फास्ट होगी या स्लो होगी? फास्ट होगी सर। फास्ट होगी। जैसे जैसे आपका क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पहले वो अगर मैं एक देखो, इसको पकड़ना मत, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इसका मतलब पहले वो सिंगल टायर में काम कर रहा था, अब वो कितने टायर में काम कर रहा है, 3 टायर में काम कर रहा है, या 2 टायर में हम बोल सकते हैं। बीच में और एक टायर आ गया है जो उसको ले रहा है, लेने के बाद जावास्क्रिप्ट को दे रहा है, जावास्क्रिप्ट से लेके उसको दे रहा है। तो मेरा दूसरा जो प्रोसेस मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा, जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है लगने दो, लेकिन बाकी जो मेरा प्रोसेस है तो सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हेलो, ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर। Yes, sir. तो इन Yes, sir. रिएक्ट अब आप चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो कि इन रिएक्ट वी ओनली इंटरैक्ट विद द वर्चुअल डोमेन, वी रीड एंड राइट द डेटा इनटू द वर्चुअल डोमेन ईच टाइम and later reflects the changes to the HTML pages using the rendered method. Listen very carefully these words. These are the very important words. In React, we only interact. जब हम React में काम कर रहे हैं, we are not interacting with the JS. मैंने पहले वाला पिक्चर क्यों बनाया? पहले वाला पिक्चर इसलिए बनाया कि आपके समझ में आए। अभी हम लोग जो काम करते हैं, HTML डायरेक्ट किससे बात कर रहा है, जावास्क्रिप्ट से। जब राइट कर रहे हैं तो HTML डायरेक्ट किससे बात कर रहा है, मेरा इससे। जब हम रिएक्ट में काम करेंगे, इट विल ओनली इंटरैक्ट विद द वर्चुअल डोम, वी रीड एंड राइट द डेटा टू द वर्चुअल डोम each time and later reflects these changes. उसके बाद जो changes जो मेरे को HTML pages में मिलेगा using the rendered method. तो अब अगर मैं पिक्चर बनाऊंगा तो मेरा कैसे बनेगा? अब देखो मेरा यहाँ पे ये आया, अब मेरा ये जो चीज थी ये उलट जाएगी, यहाँ पे भी उलटनी चाहिए थी, हमने उल्टा नहीं, ये राइट है। अब अगर मेरे को रीड करना है या राइट करना है, कुछ भी करना है, तो इसके बीच में मेरा जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, REND या रेंडर। अब ये जो मेरा बात जो आएगा, मेरा HTML के बीच में मेरा क्या आ जाएगा, वर्चुअल, बीच में क्या आ गया, मेरा आ गया वर्चुअल डोम। इसको हम क्या बोल सकते हैं? अब ये जो मेरा वर्चुअल डोम है वो किससे बात करेगा, वो मेरा बात करेगा, किससे बात करेगा, वो मेरा बात करेगा JS से। किससे बात करेगा, JS से। और उससे क्या करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे आऊं लिखूं तो इसका मतलब READ रीड, और यहाँ पे आके वो क्या करेगा, रीड एंड राइट। तो ऐसे मेरा कितना हो सकता है यहाँ पे, वापस से मैं यहाँ पे भी और एक JS यहाँ पे हो सकता है, उसमें भी वो क्या करेगा, इसी प्रकार से रीड करेगा और राइट करेगा। और मेरा कहाँ पे जाएगा, जब मेरा रिएक्ट वर्चुअल डोम मेरा HTML को जब भेजेगा तब उसके बीच में क्या क्या होगा, उसके बीच में जो घटना घटेगा उसे हम बोलते हैं रेंडर। अब समझ में आया वर्चुअल डोमेन? yes or no, please let me know. That means my HTML is whatever we are writing, that means
अगर मेरे को ये जो चीज लिखे हुए हैं ये मेरा डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में नहीं जाके किस में जा रहा है, वर्चुअल डोम में जा रहा है। अब वर्चुअल डोम से जीएस में जा रहा है, वो उसको वापस रिटर्न करके प्रोसेस करके किसको भेज रहा है, रेंडर करके एचटीएमएल को भेज रहा है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? Sir, basically it is searching for some change in the DOM. Exactly. Searching, yes, If there is a exactly. change, then it is rendering it. Rendering. Perfect, perfect. इसीलिए आप देखोगे हमारा फेसबुक में, ट्विटर में, हेलो हेलो, इसीलिए आप देखोगे हमारे फेसबुक में, ट्विटर में हम लोग जो भी लिखते हैं हाथ तो हाथ रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। हेलो, Yes sir, yes sir. it cannot be possible using only a JavaScript. So here what they are using a concept of called virtual DOM. Any question from anyone? No sir. So सर मतलब स्टार्टिंग में रेंडर हो जाता है क्या सर? जैसे HTML एलिमेंट वगैरह लिखते हैं तो डायरेक्ट रेंडर हो जाता है क्या सर? नहीं, HTML वगैरह लिखने के बाद ही, उसके बाद ही जैसे ही आप उसको रन करने बोलोगे तो वर्चुअल डोम में देखेगा कुछ करने का है कि नहीं। अगर वर्चुअल डोम में कुछ JS का पार्ट होगा तो उसको लेगा, लेने के बाद रेंडर करके HTML को दे देगा। ओके सर, ठीक है। एनी क्वेश्चन? No sir. राइट। तो हमें ये चीज थोड़ी सी समझ में आई कि रिएक्ट वर्चुअल डोम है क्या, क्योंकि ये चीज हमें लिखना है। देखो मैं अगर पहले वाला चीज आपको नहीं बताता कि HTML और ये, तो आपको ये समझ में नहीं आता। अब आपको आशा करता हूँ ये समझ में आया। और इसको अगर हमें और भी अच्छे से लिखना है तो मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ डोम राइट, और इसको मैं बोल सकता हूँ डोम रीड। तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम लोग डॉक्यूमेंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग डॉक्यूमेंट को ही रीड कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट को ही राइट कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है, अगर हमें जानना हो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, टाइम आज ज्यादा नहीं रहेगा, जस्ट मैं एक हिंट दे देता हूँ JSX। क्योंकि मेरे से एक दिन ने पूछा भी सर JSX क्या होता है, तो मैंने फुल फॉर्म बताया कि जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स XML। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स XML, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट। JSX का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स XML। JSX is a preprocessor step that add XML syntax to JavaScript। आप लोगों को थोड़ा बहुत क्या XML के बारे में मालूम है? नो सर। थोड़ा भी नहीं मालूम? Yes sir. Yes। अच्छा, XML मतलब क्या होता है? देखो हमारा जो डेटा है ना अभी, वो 2 रकम का डेटा होता है, 3 रकम का। एक होता है हमारा डेटा जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा, एक हमारा डेटा होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड, और एक हमारा डेटा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। What is the semi-structure? Semi-structured data is worse than XML data, right? Semi-structured data में क्या होता है, XML उसमें भी एक फॉलो करना पड़ता है XML, और you may have heard a word called JSON। ये 2 रकम का ये जो डेटा होते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि इनकी अपनी एक स्टाइल होती है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो इसमें जो हम लोग वैल्यू जो लिखते हैं उसको बोलते हैं की पेयर। क्या बोलते हैं? हेलो, की पेयर सर। की पेयर। What do you mean by that key pair? That means there will be a key attributes which Yes, have sir. a key name and as well as a value। हम वहाँ पे क्या मेटा टैग करते की तरह हैं? सर? हाँ, मेटा टैग की तरह क्या सर? Like an object. हाँ। अब जैसे आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे कहा कि मेरे को एक तो ये बनाना है, नाम ID, स्टूडेंट का नाम लेंगे, ID लेंगे और एड्रेस लेंगे। तो मेरा क्या होगा, स्टूडेंट बोल के एक तो टैग बन जाएगा। ऐसे एक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसका एट्रीब्यूट्स जो आएंगे वो एट्रीब्यूट्स हमेशा पेयर में आते हैं। पेयर मतलब क्या हुआ, एक तो की होगा और एक तो वैल्यू होगा, मतलब एक तो की का नाम होगा और उसका वैल्यू होगा। तो की का नाम सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया नेम, मैंने नेम में वैल्यू दे दिया ABC, अब मैंने कह दिया /नेम। अब आपने वहां पे कहा कि ID में आपने दे दिया 1, यहाँ पे कह दिया /ID।
आपने यहाँ पे दे दिया एक तो MA मार्क्स, यहाँ पे आपने कह दिया 100 और आपने यहाँ पे कह दिया स्लैश मार्क्स। अब इसके बाद आपने क्या कह दिया STUDENT स्लैश। ये जो आपका चीज आया ये एक थोड़ा सा अलग दिखने में लग रहा है। ये मेरा क्या होता है, XML फॉर्मेट होता है जिसमें हमारा जो है एक टैग होता है। ये टैग डिफाइन करता है कि क्या होगा द ऑब्जेक्ट। अब ऊपर में इसके ऊपर में हम और एक दे सकते हैं जो मेरा डिफाइन करेगा कलेक्शन, तो इसके ऊपर में हम और एक टैग दे सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसमें लास्ट में हम आके इसको क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, बोल सकते हैं स्लैश स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, कलेक्शंस ऑफ स्टूडेंट, और उसके भीतर ये हुआ एक एक करके स्टूडेंट। ऐसे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हो। दिस इज नोन एज व्हाट, एन XML। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। राइट। सो मैं आपको XML नहीं पढ़ाया, जस्ट एक व्यू दिया कि XML में कैसे वैल्यू रहते हैं। XML में हमेशा जो वैल्यू रहते हैं वो रहते हैं की और की पेयर में, की और वैल्यू, और But हमेशा this उसके type ऊपर of में data is sent in SOAP API. yes, based on data is sent. Now the data can be sent. The data when you are saying it can be sent in two ways. Right now I'm not talking much about it. When I require I will say it will be an XML or it can be a JSON. Nowadays the data whatever we transfer, whatever the API we write, whenever we write, the API will send you a data no more in an XML. Only there are the previous versions of API are sending the data in XML. The recent version, whatever the version right now any development is happening, all the data is sending a JSON. राइट। तो अभी हम लोग जितना भी प्रोग्राम बनाते हैं उसमें सब हम लोग किससे भेजते हैं, सब जेसन से भेजते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम को अगर हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, लिखेंगे, तो उसको क्या होगा, राइट डाउन इन योर कॉपी। मैं कल फिर इसको बताऊंगा। इफ दैट व्हाट डिड JSX? JSX stands for JavaScript Syntax XML. JSX is a preprocessor step that adds XML syntax to JavaScript. Just this line. JSX is a preprocessor step that adds XML syntax to JavaScript. JSX is a syntax extension to JavaScript. JSX is a syntax extension to JavaScript. React use JSX for templating instead of regular JavaScript. React use JS for template or templating instead of regular JavaScript. Can you say me what do you mean by this templating? Hello. सर What do you mean by templating? Template का मतलब क्या होता है? सर वो HTML पेज, बूटस्ट्रैप, सर वो टेम्पलेट, फ्रंट एंड सर, लाइक टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? टेम्पलेट मींस दैट मींस इट इज प्री-डिफाइंड. दैट मींस यू हैव अ प्री-डिफाइंड परफॉर्मा. एक टेम्पलेट आपका बना हुआ है. इसी टेम्पलेट में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जब आप उसको वैल्यू दोगे वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट कर देगा, JS में कन्वर्ट कर देगा. तो वही टेम्पलेट मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग HTML में लिखते हैं जो प्री डिफाइंड कुछ टैग्स दिए गए हैं, मतलब उसका एक टेम्पलेट दे दिया गया है कि आप जब भी कुछ JS को लिखोगे तो JS को JS में मत लिखो, उसको रिएक्ट का जो है किसमें लिखना पड़ेगा, रिएक्ट का अपना एक टेम्पलेट है उसमें लिखना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन अ रेगुलर जावास्क्रिप्ट. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू राइट or get a value of any component, if you are using a JavaScript, you have to write document.getElement by ID. Am I right? All of you? Yes, sir. Right? So document.getElement by ID. लेकिन उसने कहा कि आपको JavaScript जानने की जरूरत नहीं है. आप क्या करोगे, मैं एक तो टेम्पलेट दे दिया आपको. सपोज मैंने कहा कि अगर आपको वैल्यू लिखना है तो कर्ली ब्रेसेस के भीतर, ध्यान से सुनना, दो ठो कर्ली ब्रेसेस दे दो, उसके भीतर इनसाइड दैट पुट द नेम ऑफ द कंपोनेंट.
put the name of the component. Which one is easier? Document.getElementById or putting a name inside a curly braces? Putting the name inside the curly braces. Curly braces. So what it is doing? It is converting that into the JavaScript. Are you getting it? वो उसको किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है? जावास्क्रिप्ट में. तो अल्टीमेटली हमेशा याद रखना कि आप लोग कुछ एक जन जो एंगुलर भी किए हो, ये चीज हमेशा याद रखना. वी हैव टू रिमेंबर दिस इन आवर माइंड. Whatever we are writing, remember this thing. Whatever you are writing, in a manner that makes you to write less, in a manner that makes you to write fast, in a manner that helps you in developing a good project, ultimately at the end of the day, it is converting it into a JavaScript. Remember this. Ultimately किसमें convert हो जा रहा है? जब आप डिप्लॉय करोगे, तब आपका कोड किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? The entire code is converted into the JavaScript. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So this is the keep it in mind. This is the main thing that we are going to learn how to write first of all the JSX. अब मेरा JSX हो गया, मतलब पहले हम लोग एक व्यू बना लिए. अब व्यू बनाने के बाद आपका क्वेश्चन आएगा, सर ये व्यू बनाए, अब इसको हम लोग इंटरैक्ट कैसे करेंगे, मतलब इसको काम कैसे करेंगे. उसके बाद हम लोग फ्लूड में जाएंगे. तो फ्लूड में जाने के लिए हमें क्या चाहिए सर? एक डेटाबेस चाहिए. अच्छा, कौन सा डेटाबेस यूज करना चाहते हो? स्ट्रक्चर या नॉन स्ट्रक्चर? सर आजकल स्ट्रक्चर तो किए हैं, आप थोड़ा नॉन स्ट्रक्चर से दिखाइए. तो मैं बोला अच्छा चलो मोंगोडीबी में दिखाता हूँ. तो मोंगोडीबी में आप जब बोलोगे सर नो एसक्यूएल, तो नो एसक्यूएल दिखाएंगे. हम लोग क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट स्टोर कर लेंगे. तो जब हम लोग पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, वो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे. वो ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ दिखाएंगे? सर एक कंपोनेंट में घेरना है, एक कंपोनेंट में घेर देंगे. इज इट क्लियर? Yes, sir. अब आपने कहा कि सर ये चीज हुआ, आपने एक एपीआई बोल के चीज बताया था, तो एक तो एपीआई भी दिखाइए कैसे बनाएंगे. तो फिर हम लोग नोड जेएस में जाएंगे. तो नोड जेएस में अगर डायरेक्ट एपीआई बनाएंगे तो फिर बहुत टाइम लगता है. जब हम लोग के टाइम जब था नोड जेएस आया था और कुछ था नहीं. अब नोड जेएस के साथ बहुत सारी लाइब्रेरीज आ गई हैं. नोड जेएस के साथ कौन काम करता है? एक्सप्रेस बोल के एक काम है, एक जिन है, वो काम करता है. तो यूजिंग एन एक्सप्रेस वी कैन क्रिएट व्हाट? वी कैन क्रिएट अ ब्यूटीफुल एपीआई. इज इट क्लियर? तो हम लोग एक सुंदर सा क्या किए? एक सिस्टम बना लिए जो कि आपको समझ में आया कि हाँ हम लोग सीखें. यस और नो? Yes, sir. This is what we are going to learn and this is my methodology. This is my methodology. मैं वो खाली वो जो है आपसे काम करवाऊंगा. इसीलिए प्लीज जब मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा, मैं कोई रेडीमेड कोड ला के नहीं दिखाऊंगा. मैं रेडीमेड कोड ला के नहीं चला देता हूँ. मैं आपके साथ कोड लिखूंगा, आप मेरे साथ कोड लिखोगे. ये याद रखना. ठीक है? आप मेरे साथ कोड लिखोगे. मेरे पास 70 स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट है, जितने भी हैं, all the students should write the code with me, and when I am writing, it may happen that you may not able to go with my speed. No problem, I will give you an ample time to check it out. Is it clear? Yes, sir. Yes, sure, sir. So I think I am keeping up to this today, and let me know how you feel. Is it good? Yes, sir. Good. Yes, sir. Yes, sir. Great, sir. Thank you to all of you, and Thank you, sir. I am going to meet Thank you, sir. again Thank you, tomorrow. sir. We had a wonderful session with you. Thank you, sir. thank you. Thank you Sir, so sorry much. to interrupt. Just give me a minute, sir. Yes, sir. Victor this side, sir. नहीं समझ में आया, बताइए. Yeah. So guys, you had your first session. Just informal feedback. How did you like it? Guys, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Like it, Very sir. wonderful. Enjoyed it. Okay. All right. All right. Yes, sir. We enjoyed it, sir. Yeah. I was checking your chat box and everything. So like it went well, and I hope all the session would be like this only. So just a request. This is the first session, but post that we'll be taking some written feedback also. So do participate in all the feedback. All right. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Sure, sir. Let's not waste time. Already you have attended 2 hours of session, and tomorrow onwards it's 5 hours onwards. So, but you know how much interesting it is going to be. So just I'm checking 53 students are here, but we are given there would be 70 odd students. So just share with your friends, okay? And ask them to come tomorrow. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Sure, sir. Yeah. Okay, sir. Sir, I'm Okay, done sir. from my side. Yeah. Any question? No. Sir, how should we mark our attendance?
Sorry, Sir, attendance. Yeah, right. Yes, sir. Actually, About I was TL, sir. sir, we asking have to your. put that ID with our name. Yeah, that's what I mean. I was asking your college side, but they haven't confirmed me yet anything. So let's do one thing. Just stay with me for 2 minutes. I'm floating a Google form. For today, you just fill up that Google form, and from tomorrow onwards, we'll come up with something confirmed. Okay? Victor, Okay, may I sir. Okay, leave? sir. Sir, okay, sir. Victor, may I leave? Yeah, sir. You can leave. Okay, thank you, and good night to all of my students. Thank you, sir. And Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you good so night much. to all Thank you, of you. sir. Okay, okay, and take care. Thank you, Stay sir. home. Good night, sir. Okay, okay, Good good night, night. sir. Good night, sir. Yes, guys, just stay with me 2 minutes. Give me 2 minutes, huh? Yes, Fine, yes, sir. sir. Fine, sir. Yes, sir. Okay, sir. Fine, sir. Hello, sir. Yeah, just give me 1 minute. Sir, I'm having a doubt. Doubt on? Sir, I got the info from somewhere else that the session only for a week. Is it true, Only sir? for? For a week or this week? No. It Is is it going true? to be 70 hour session. You haven't Thank shared. you, You are not shared with the entire schedule. There is 14 days training. sir. Yeah, thank you, sir. Till the end of this month. You are not given the schedule. Yes, sir. Sir, we are given, sir. It is said that Yeah, it will be held till 30th August, sir. Yes, right. That will be held till 29th actually, precisely. Fine, sir. Fine. fine, sir. Guys, you write your roll number or ID. ID, sir. ID. Okay, just a minute. Sir, in the chat box? No. I'm saying you are marked by your ID or roll number. That's what I'm saying. Sir, ID, sir. Registration sir. number. Okay. Roll number could clash, sir. Yeah, okay, fine. Registration number. Registration Sir, number. registration number, sir. Registration number, ठीक है. हेलो Yeah, I'm there. सर वो जो कोड था ना जैसे नाम के आगे कोड लिखा है I don't know exactly actually आपके आगे क्या आपके उधर क्या हो. So आपका registration number is unique, right? Yes, sir. Yes, sir. It's Yes, unique, sir. yes sir Yeah, just making a registration number. Actually, today from your college side, nothing was communicated. So let's do it my way today. आप लोग सारे फोर्थ फाइनल ईयर के हो ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, And सारे sir. कंप्यूटर साइंस से हो? Yes, ID, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Only computer science. Okay. Then need not to write that. I'm keeping a column phone number. You can keep it blank because I don't need that one, but it is an optional column. Okay. Sure, sir. I need your name, mail ID, and registration number. That will be okay.
Yeah, sir. That's, Okay, that's sir. all. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, yes, sir. Okay. I'm posting it in the chat box, the link, attendance link. Just check. Did you get it? Yes, sir. Got it, sir. All of you Yes, check? sir. Got it. Okay, fine. Yeah, please fill it up. So shall we leave? Yes, sir. Yeah, Yes, chalo. sir. So see you tomorrow. Thank you, Just sir. Thank you, yeah, sir. I'll keep it open for 5 minutes. आप लोग link ले लो, copy कर लो. Okay, sir. Okay, sir. Sir, Thank you, कर sir. लिया, sir. Copy कर लिया, sir. Yeah, fine. Thank you. Thank you, sir. Good night. Good night, sir.